Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concept from mathematics. Whether you belong to BE, BSc or diploma background or you are preparing for your competitive exams, I am here to help you all. So, चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से. Today we will be discussing consistency of non-homogeneous equations. In last video, हमने देखा है what is homogeneous equation, what are non-homogeneous equations. Okay, अभी उन इक्वेशंस को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें चेक करना होगा पहले कि क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं. सो टू वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस. क्या होते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस? हमने पिछले वीडियो में देखे हैं ऐसे इक्वेशंस जहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है. करेक्ट. गिवन अ मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी, ये जो बी मैट्रिक्स होता है वो नल मैट्रिक्स नहीं होता, मतलब उसमें कुछ वैल्यूज 1 2 -1 ऐसे वैल्यूज होते हैं. तो इस ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है नॉन होमोजेनियस, राइट. सो फॉर सच इक्वेशंस नाउ गिवन अ system of equation where we are having ax equal to b as a matrix notation, m equations दिए है n unknowns में. तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, से m is not equal to n means what, number of equations is not equal to number of unknowns. मतलब क्या, सपोज हमें इक्वेशंस दिए है x plus y equals to 1, x minus y equals to 2 and x plus 2y equals to 3. So now if you observe in this, how many number of unknowns we have, x and y. X and y are the two unknowns, but how many equations we have? We have 3 equations. तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, whereas m की वैल्यू है 3. m is not equal to 3. तो ऐसे केस जब होते हैं तो क्या कैसे चेक करेंगे कंसिस्टेंसी, तब हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे. So what we will be writing the matrix notation, matrix form of it. Then we will be writing the augmented form. Augmented form को हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके reduce करेंगे. And when we will reduce, we will check what is the rank. What is the rank of a augmented matrix and what is the rank of matrix A. And then we will check if both are equal. If both are equal, that is the rank, then we will call it as consistent. अगर rank of A and rank of A augmented B नहीं same है तो it is inconsistent and it directly goes for no solution. means inconsistent होगा तो solution नहीं मिलता, अगर consistent होगा तो ही solution मिलता है. Now how to decide whether how many solutions the system has, whether it is unique or infinite? It depends on what is the value of the rank. If the rank is equal to number of unknowns, then it has unique solution. If the rank is less than number of unknowns, then it has infinitely many solutions. Means यहाँ पर अगर rank 2 आती and number of unknowns भी 2 है, तो it will have unique solution. If rank is 1 and since it is less than number of unknowns, that is 2, it will have infinite many solutions. Okay, this same case is applied for the condition where we have m is equal to n but greater than 3. Means what, number of equations, number of unknowns same hai but greater than 3. Means we have 4 equations, 4 unknowns, 5 equations and 5 unknowns and so on. Means x plus y plus z plus t equals to 3, x minus y plus 2z minus t equals to 4. Say x plus y minus z plus 2t equals to -1. X minus y minus z minus t equals to 0. So these are 4 equations and x, y, z and t, these are 4 unknowns. So ऐसी केस होगी तो भी conditions क्या है, same है. They are write it in the matrix form, write the augmented form, reduce it and check what is the rank. If rank of A is equal to rank of augmented B and if that rank is equal to number of unknowns, unique solution. If that rank is less than number of unknowns, infinite solutions. If we observe the system is inconsistent, that is rank is not equal, then system has no solution. The third case is where we observe that
number of equations is equal to number of unknowns and it is equal to 3. Means what we will observe, we will be getting a 3 cross 3 matrix here. So suppose we have x plus y plus z is equal to 1, x minus y plus z is equal to 0, x plus y minus z equal to minus 1. अगर ऐसे तीन इक्वेशंस है, हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तीन इक्वेशंस है, x y z तीन अननोन है. So whenever we'll be writing the matrix form of it, it is always going to be a 3 cross 3 matrix, correct? So now when we have a 3 cross 3 matrix, we have a shortcut method, we have a short method to find a solution. One more method क्या include हो रहा है यहाँ पे कि instead of going for reduction method मतलब क्या, write it in the augmented form and reduce by row transform. Instead of going for reduction method, directly by inversion method also we can solve. यहाँ पे हम case क्या देखेंगे, but whenever we have 3 cross 3 matrix, we can go for checking what is the value of determinant. If determinant is observed to be not equal to 0, it's non-zero, we can directly find the inverse matrix. Okay, and inverse matrix हम directly क्या find out कर सकते हैं, unknowns की value से कर सकते हैं. Ax equal to b है, correct? If you multiply both sides by a inverse, ये होगा a inverse into a into x equals to a inverse b. A inverse a into a is identity into x, identity into x is x itself, the x is equal to a inverse into b. ये इक्वेशन मिलता है, right? So by multiplication property, तो ये क्या हो जाएगा, we can directly say that the system has going to have a unique solution. But if the case is that determinant is equal to 0, then we have to go for our regular reduction method, checking the rank and finding the solution. So it is up to now. इसका मतलब ये है क्या कि it is compulsory to find determinant? It's not necessary. If you want to directly go by reduction method instead of checking the determinant and then finding selecting inversion or reduction, instead you can directly go for reduction and get the same solution. There also unique solution, infinite solution मिलेगा. It is up to you how you solve. I hope this is clear. So these were the conditions to check for the consistency. Let us discuss few examples based on it so that हमें clear हो जाएगा ये conditions कैसे apply करनी है. Okay. So let's discuss this example. The question says examine for consistency and if consistent then solve it. Means check करो ये consistent है या नहीं. अगर consistent है तो find out the solution. कितने solutions है, unique, infinite, many or so on. So now what are the given equations we are having? Given equations are x plus y plus z equals to 6. Then x minus y plus 2z equal to 5. The third equation 3x plus y plus z equal to 8 and 2x minus 2y plus 3z equals to 7. So now if you observe, we are having here three unknowns. Number of unknowns कितने हैं? Number of unknowns, that is n is equal to 3, and whereas number of equations, that is m is equal to 4. So this is a condition where we have checked where number of equation and number of unknowns is not equal. तो consistency check करने के लिए क्या करना है, rank find out करना है. तो rank find out करने के लिए पहले हमें लिखना होगा इसका मैट्रिक्स फॉर्म. तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म होगा 1 1 1 फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो होगा 1 minus 1 2 3 1 1 2 2 3, करेक्ट. ये हो गया मैट्रिक्स A. Then the unknown matrix, that is x y z, that is matrix X, and 6 5 8 7, this is matrix B. This is non-homogeneous. Why? Because this is not a null matrix. So this is AX equal to B form. तो augmented form क्या होगा, augmented matrices A augmented B is going to be
1 1 1 1 minus 1 2 3 1 1 2 2 3 and then 6 5 8 7. Correct? So now let's perform transformations on it and reduce this matrix to echelon form. So क्या transformations कर सकते हैं हम इस पे? फर्स्ट रो वैसे ही रखेंगे, सेकेंड रो का यूज करके सेकेंड रो को हम रिड्यूस करेंगे इस वन को, इसके फर्स्ट वन के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो करने. तो वी कैन परफॉर्म R2 minus R1. Simultaneously we can perform R3 minus R2 minus 3R1 and R3 minus 2R1. So performing these transformations, this matrix, augmented matrix, will reduce as 1 1 1, then 0 minus 1 minus 1 minus 2 and 2 minus 1 1. Simultaneously on the right hand side of this straight line भी हमें evaluate करना है, तो 6 वैसे रहेगा, 5 minus 6 minus 1. Then R2 minus 3R1, तो ये तो 0 होगा, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 3 minus 2, and this is going to be 8 minus 18, so minus 10. Next row R3 minus 2R1, so ये होगा 0, R3 minus 2R1, तो ये होगा 2 minus 2 minus 4, then 3 minus 2 1, and this is going to be 5 minus 5. Correct? Now क्रॉस में हमें नीचे आना है, सेकेंड रो में ये होगा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इसके नीचे के एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं, जीरो करने. तो क्या होगा, व्हाट कैन बी द ट्रांसफॉर्मेशंस वी कैन परफॉर्म हियर? वी कैन परफॉर्म हियर इज R3 minus R2 and R4 minus 2R2. दिस इज यहाँ पे मैंने सही लिखा था, ये R3 है एंड ये R4 है, so क्या होगा augmented matrix? This will be first row तो 1 1 1 वैसे ही, second row 0 minus 2 1 minus 1, then this will be 0 0 and minus 3 minus 10 plus 1 minus 9. Last row 0, ये 0 होगा, 1 minus और ये हो जाएगा 1 minus 2, तो ये होगा minus 1 and minus 5 minus 2, that is plus 2, तो minus 3. अब क्या कर सकते हैं, either you can interchange the rows first, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, ये इंटरचेंज कर सकते हो पहले और फिर रिड्यूस कर सकते हो, या फिर इसे रिड्यूस करके फिर इंटरचेंज कर सकते हो. It is up to you. We can interchange R3 and R4. तो इंटरचेंज करने पर ये क्या होगा, ये होगा 1 1 1 6 0 minus 2 1 minus 1, then 0 0 minus 1 minus 3 0 0 minus 3 minus 9. Right? Now we can perform the transformation as R4 minus 3R3. So on this, performing this transformation, this is going to be 1 1 1 6 0 minus 2 1 minus 1 0 0 minus 1 minus 3 0 0, then minus 3 plus 3 0 minus 9 plus 9, again this is going to be 0. Now if you observe, this is nothing but, you can express this, or you can again split this as nothing but in the form as 1 1 1 0 minus 2 1 0 0 minus 1 0 0 0. Our unknown matrix x y z equals to the matrix B now, which we have obtained newly, 0. This is nothing but AX B equal to B form. So what is the rank of A? If we observe here, rank of A reduce. Okay, how many number of non-zero rows are there? 3. So rank of A यहाँ पे है 3. What is rank of A? Augmented B. सारे अभी augmented देखते वक्त क्या करना है, टेम्परली भूल जाओ कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक एट द फुल लाइन. सो फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है, थर्ड रो भी नॉन जीरो है,
बस लास्ट रो में सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है. सो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा. सो वी ऑब्जर्व दैट rank of A is equal to rank of A augmented B, which is equal to 3 and which is equal to n, that is number of unknowns. तो ये नंबर ऑफ अननोन से इक्वल है, मतलब केस क्या है, नंबर ऑफ अननोन जब इक्वल होते हैं हम कहते हैं कि ये सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, बिकॉज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी. एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. System is consistent and possess unique solution. So what is the solution? Now to check that solution, we will now write down this from the star equation. We can write down the equations. क्या equations मिलेंगे हमें यहाँ पे? फर्स्ट रो से मिलेगा x plus y plus z equals to 6. सिंपली ये a मैट्रिक्स एंड x मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो x plus y plus z, करेक्ट, इक्वल टू 6. सेकेंड रो एंड कॉलम, तो वहाँ x तो 0 है, देन ये होगा सेकेंड इक्वेशन मिलेगी -2y plus z equal to -1. एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा, -z equal to 3. तो -z equal to 3 मतलब क्या, यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल गई 3. ये सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, -2y plus 3 equals to -1. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2, correct. And when you substitute x, y and z in this first equation, and x plus 2 plus 3 equals to 6, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1. So what is the solution we have? The solution we obtained here is x equals to 1, y equals to 2 and z equals to 3. This is the required solution. Let us discuss one more example. Question 6, examine for the consistency and if consistent then solve it. तो अभी ये equations जो दिए हैं हमें, इसमें कितने इक्वेशन अननोन्स है, नंबर ऑफ unknowns is equal to 3 and number of equations is also equal to 3. So this is a case where m is equal to n and is equal to 3. अभी यहाँ पे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो और या फिर आप रिडक्शन मेथड से जाओ. मैं कहूँगी आप इन्वर्जन मेथड से खुद से देख लो, मैं रिडक्शन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके देखती हूँ. तो रिडक्शन मेथड से हमें सॉल्व करना होगा तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखना होगा फिर से यहाँ पे. तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, 2 minus 3 5 3 1 minus 1 1 4 minus 6. This is your matrix A. Then x y z, this is matrix X, and 1 2 1, this is matrix B, that is AX equals to B. So what is augmented form? Augmented matrix is 2 minus 3 5 3 1 minus 1 1 4 minus 6 1 2 1. This will be the augmented form. So augmented form से हमें क्या मिल जाएगा, अभी रिडक्शन करना है, रिडक्शन करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे. नाउ हमें रो इकोलॉन फॉर्म में अगर करना है तो हमें क्या करना हो, हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रो में 1 चाहिए. फर्स्ट रो में अगर 1 होगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 होगा तो ज़्यादा आसानी होता है. तो थर्ड रो में है, we will interchange third row and first row. So interchanging this, what do we get, 1 4 minus 6 1. Second row remains as it is, 3 1 minus 1 2, and third row becomes now 2 minus 3 5 and 1. Now using this 1 we will reduce the matrix. So क्या होगा इसका reduction, this is going to be now R2 minus 3 R1 and
r3 minus 3 r sorry r3 minus 2r1. So using this transformation ये क्या मिल जाएगा, ये होगा 1 4 minus 6 and on this one as it is, then this is going to be 0, 3 minus 3 is 0, then 1 minus 12 होगा, ये यहाँ पे 4 है तो minus 12, तो ये होगा minus 11, minus 1 plus 18 होगा तो ये होगा 17, and this is going to be 2 minus 3, that is minus 1. Similarly, now this is going to be 0, 2 minus 2 0, minus 3, minus 8, again minus 11, and 5 plus 12, this is going to be 17, and this will be minus 1. ये तो ज़्यादा ही आसान दिख रहा है. ये क्या होगा, r3 minus r2 करोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, ये 1 4 minus 6 1 0 minus 11 17 minus 1, ये रो टोटली क्या हो गई, 0 हो गई. minus 11 plus 11 0, 17 minus 17 0, minus 1 plus 1 0. So now what do we observe? If you have to check what the rank, what will be the rank of A here now? Just hide this augmented. B का B टर्म्स टेम्परली नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट पार्ट देखो. तो कितने नॉन जीरो रोज है, 2 है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2. रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड क्या होगा, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड, अभी टोटली रोज दिखने हैं तो टोटल रोज देखोगे तो रैंक फिर भी क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 है. तो रैंक ऑफ ए is equal to rank of A augmented B, which is equals to 2. So we can say here system is what, consistent. But how many solutions does it have? Now we observe here rank कितनी है, 2, but number of unknowns कितने हैं, 3 है, तो it is less than n, which is equal to actually 3. number of unknowns से क्या है, rank less है, तो system क्या होगी, system will possess infinite number of solution. And what will be those solution now? Now जब भी ऐसे केस होता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, देखो अभी इस ये जो है से इट इज स्टार मैट्रिक्स, इससे हम क्या करेंगे, we can either direct write out in Ax equal to B form for our understanding. Say here what is it going to be, 1 4 minus 6 0 minus 11 17 0 0 0. ये है मैट्रिक्स A x y z and 1 minus 1 0. ये है मैट्रिक्स x a x e and b, करेक्ट. तो इससे हमें इक्वेशंस क्या मिलेगी, फर्स्ट रो से मिलेगी x plus 4y minus 6z equals to 1. सेकेंड रो से मिलेगी minus 11y plus 17z equals to minus 1. एंड थर्ड रो से तो कोई इक्वेशन मिलेगी ही नहीं. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो इक्वेशन है बट 3 अननोन्स है. सो जब ऐसी केस होती है तब हम क्या करते हैं, इस किसी एक अननोन को हम ट्रीट करेंगे एज अ फ्री वेरिएबल. फ्री वेरिएबल मतलब क्या, क्यों कहते हैं फ्री वेरिएबल, इट टेक्स एनी वैल्यू. सो लेट हियर z is equals to t. What is this t? This t is your any free variable. Free variable means what? T can take any value. It can be 0, minus 1, 1, 2, anything. And as per that t value, हमारी x, y, z की वैल्यू बदल रहेंगे. तो जितने तुम t के वैल्यूज कंसिडर करोगे उतने तुम्हें x, y, z की वैल्यूज मिलते हैं. इसीलिए कहा जाता है infinite many solutions. Okay, so this is going to be now say z is equal to t. So इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, minus 11y plus 17t equals to minus 1. So यहाँ से मिलेगा minus 11y equals to minus 1 minus 17t, and therefore y मिल जाएगा 1 plus 17t upon 11. There is a negative sign which gets cancelled out. So we have now y, we have z in t form. So therefore what will be x? X plus 4 times 1 plus 17t upon 11 minus 6t equals to 1.
सो 11 मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट तो ये होगा 11x equals to, we'll shift this term, we can, or you can write it as temporary, plus 4 plus 17 into, this is going to be 4, so that is going to be 68t minus 66t equals to 1. So ये हो जाएगा 11x equals to, ये 68 minus 66 तो 2 हो जाएगा, 1 shift करोगे तो ये क्या हो जाएगा, sorry, this is not going to be 1, this is going to be 11, I'm sorry. तो ये होगा 11 minus 4 that is 7 minus shift करोगे 2t upon 2t, that means x की वैल्यू मिल गई 7 minus 2t upon 11. So here we have x, y and z. This is the required solution. X is equals to 7 minus 2t upon 11. Y equals to 1 plus 17t upon 11. And z equals to t. So this is the solution we observe here, which is depending on the value t, variable t. So if you substitute t as equals to 0, तो तुम्हें accordingly x, y, z variable vary होगा. t अगर 1 डालोगे तो accordingly x, y, z की अलग value मिलेगी. That will be the solution set, and hence it is known as infinite solution set. I hope this condition for consistency of non-homogeneous equations is clear and these examples are clear. तो ये था आज का वीडियो. आज के वीडियो में हमने देख लिया क्या है कंडीशंस कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अगले वीडियो में हम देखेंगे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस. तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.